हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लास 6 कंप्यूटर क्लासिफिकेशन लेसन 1 है जिसका नाम है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 6 का पहला लेसन है ये। आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ थीं, उन्हीं के बारे में हमें इस लेसन में बताया गया है। तो अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक खोल लीजिए और हम पढ़ रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। और उसकी जनरेशन वगैरह के बारे में भी इस लेसन में बताया गया है। सुनिए। We know that computer is an electronic machine to perform a mathematical and logical calculations. The history of computers tells us that Charles Babbage is called the father of computers. Now in this chapter we are trying to describe the types of computers and elaborated classification of computers. Computers can be classified in various ways depending on their generation, working size and brand. Generation of computers. A generation refers to the state of improvement in the development of the product. With each new generation, the circuitry has gotten smaller and more advanced than the previous generation before it. As a result, the miniaturization, speed, power and memory of computers have proportionally increased. New discoveries and constantly being developed that affect the way we like, work and play. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक थी, इसमें हमें बताया गया। लिखा है 1946 टू 1958 वैक्यूम ट्यूब। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर ह्यूग, स्लो, एक्सपेंसिव एंड ऑफ्टन अनडिपेंडेबल। इन 1946 टू अमेरिकन्स प्रिस्पर स्कर्ट एंड जॉन मैकुली विल्ड द यूनिकेव इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर which is used vacuum tubes instead of the mechanical switch to Mark I. The ENIAC used thousands of vacuum tubes which took up a lot of space and gave off a great deal to heat, just like lights bulbs do. द सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1964 ट्रांजिस्टर जिसे कहा जाता था। लिखा है इन 1947 3 साइंटिस्ट जॉन बर्डीन, विलियम शॉकली एंड वाल्टर ब्रेटन working at ATTS Bell Labs invented transistor. The transistor was faster, more reliable, smaller and much cheaper to build than vacuum tubes. On transistor replaced the equivalent of 14 vacuum tubes. These transistors were made of solid materials, some of which is silicon and abundant elements second only to oxygen. Conduct electricity faster and better than vacuum tubes. ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उससे थोड़ा सा स्मार्ट था और उससे अच्छा था, वो बताया गया इसमें। इसकी थर्ड जनरेशन 1965 टू 1970 इंटीग्रेट सर्किट्स। द इंटीग्रेट सर्किट्स और एज इट्स sometimes referred to as a smaller chip packs to huge number transistor onto a single wafer to silicon. Robert Noyce and Fairchild Corporation and Jack Kilby of Texas Instruments discovered the integrated circuits. Most electronic devices today use some form of integrated circuits placed on printed circuits board, thin piece of fiberglass, and have electronical concentrations each on them, sometimes called a motherboard. These third generation computer could carry out in instruction in billions of seconds. The size of these mechanics dropped to the size of small for cabinet. द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 टू टूडे, यानी कि 1971 से आज तक जो हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है वो कौन सी जनरेशन का है? फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। उसके बारे में हमें बताया गया है। लिखा है दिस जनरेशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ अ जंप ऑफ ए मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें पुट ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स एंड इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर by putting millions of transistors onto one single. Putting millions of transistors in calculation and faster speed could be reached by computers because electricity travels about a foot in a billionth of second the smaller of distance. The greater the speed of computer. Ted Hoff, employed by Intel, invented a chip the size of a pencil eraser that could do all the computing and logic work of a computer. The microprocessor led towards the invention of a personal computer of microcomputers. The fifth generation computer 1984 to 1919. The fifth generation saw the introduction of machines with hundreds of processors that could all
be working on different parts of a single program. That scale of integration and semiconductors continued at an incredible pace. By 1919 in was the possible to build chip with 1 million components and semiconductor memories which become standard on all computers. Other newer developments were the widespread use to computer networks and the increasing of the single user workspace. Sixth generation of computer 1919 लिखा है ट्रांजिशन बिटवीन जनरेशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आर हार्ड ऑफ डिफाइन स्पेशली एज दे are taking place. Some changes such as a switch from vacuum tubes to transistors are immediately apparent as fundamental change, but others are clearly only in thinking now about something in the past. Many of the developments in computer systems science 1990 reflect a gradual improvements over established system, and thus it is hard to claim they represent a transitions to a new generation, but other developments will prove to be significant change. लिखा है एनालॉग कंप्यूटर. An analog computer is a form of computer that uses a continuous physical phone such as electrical, mechanical or hydraulical quantities to model the problem being solved. Digital computer. This is a computer that performs calculation and logical operations with quantities represented as digit, usually in the binary number of system. हाइब्रिड कंप्यूटर जिसे हम एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग प्लस डायलॉग दोनों इसमें सेव होते हैं, डिजिटल इसमें सेव होते हैं. लिखा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर दोज आर कैपेबल ऑफ इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स. अ हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम सेटअप्स offer a cost-effective method of performing complex simulation. Supercomputer. The faster type of computer, supercomputer, are very expensive and are employed by specialized applications that require immense amounts of mathematical calculations. For example, weather forecasting requires of a supercomputer. Other uses to supercomputer include animated graphics, fluid dynamics calculations, nuclear energy research and petroleum exploration. Mainframe computer. It is a very large and expensive computer capable of supporting hundreds or even thousands of users stimulations in the arrangement according to their importance. A simple microprocessor at the bottom end moves to supercomputer at the top. A mainframe are just below supercomputers. Mini computer. A mid-sized computer in size of power. Mini computers lie between workstations and mainframes. In the past decade, the distinctions between large mini computers. अब माइक्रो कंप्यूटर है. द माइक्रो कंप्यूटर इज ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्टोरेज प्रोग्राम दैट यूजेज अ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम and a random access memory. Some of the microcomputers desktop computer, a personal of a micro mini computer sufficient of a fit on desk. लिखा है वर्क स्टेशन. A terminal of desktop computer in a network. In this context, workstation is just a generic term for a user machine in contrast to a server of mainframe. IBM computer refers to a family of personal computers produced by IBM. Apple Macintosh computer. The Macintosh of a Mac is line of a personal computers designed, developed and marketed by Apple. It is initially target mainly at the home, education and creative professional markets. तो ये लेसन आपका समाप्त हुआ. आपको ये लेसन अच्छे से पढ़ लेना है और कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन उनके बारे में अच्छे से समझ लेना बातों को. और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, टिक वाले क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स हैं, जो भी जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आपको PDF के रूप में वीडियो के साथ ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे. तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.